Hello aspirants and welcome to EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 21st January 2023. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article is about the report which has been published. अब इस रिपोर्ट का नाम है ASER 2022. अब ASER stands for Annual Status of Education Report. Now this is a very important report. अब ये गवर्नमेंट पब्लिश नहीं करता है, इसे पब्लिश करता है एक एनजीओ जिसका नाम है प्रथम. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. एंड ऑल्सो ये जो रिपोर्ट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवील हुए हैं. ठीक है, तो अबाउट दिस स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, स्पेशली अबाउट द प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया के बारे में हम कुछ यहाँ पे फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच हैव बीन रिवील्ड एंड विच हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. नाउ दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स एंड आल्सो फ्रॉम मेंस. इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर जीएस पेपर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स. So the report that has been published this year, that is ASER 2022, this is the 17th version of the report. It stands for Annual Status of Education Report and this is released by NGO Pratham. याद रखिएगा इसे गवर्नमेंट पब्लिश नहीं करता है. It is published by NGO Pratham. And this basically highlights the impact of pandemic on education. ठीक है, because ये जो year है after pandemic, the things have quite changed. तो किस तरीके से impact किया education पर? Now certain things have been revealed by this particular data or the report. The report unveils high enrollment of children in schools, which is a very good performance indicator for government programs like the Nipun Bharat. अब इसके बारे में हम बात करेंगे जो निपुण भारत है. तो बिकॉज दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो निपुण स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी. ठीक है, अब ये जो स्कीम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एजुकेशन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया. अब ये जो स्कीम है निपुण भारत स्कीम विच स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी. इट इज इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी. ठीक है, अब ये जो डिपार्टमेंट है इट इज बेसिकली वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. अब ये जो निपुण भारत है इसका विजन देखिए क्या. इट एम्स टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी इन द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर एवरी चाइल्ड बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3. तो इंडिया में यहाँ पे ताकि ग्रेड 3 तक जो भी क्लास 3 है तो ताकि क्लास 3 तक दे हैव गॉट अ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बेस. तो इसी के लिए ये जो स्कीम है ये लाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो एंड दिस हैज बीन टारगेटेड बाय द ईयर 2026 to 27 and this is basically a part of the NEP 2020. So NEP 2020 stands for the National Education Policy 2020, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जाता है. It also aims to cover the learning needs of children in the age group of 3 to 9 years. So जो report है that is ASER. So it's an annual citizen-led household survey that aims to understand whether children in rural India are enrolled in school and whether they are learning or not. तो आप अगर देखोगे तो ये जो फोकस है ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट तो इट मोनली फोकसेस इन द रूरल इंडियन पार्ट. ASER हैज बीन कंडक्टेड एवरी ईयर सिंस 2005. तो अगर आप देखोगे 5 से कंडक्ट होकर आ रहा है, एनुअली पब्लिश होता है. ठीक है, और ये साल का जो रिपोर्ट है इट इज 17th ASER रिपोर्ट राइट इन ऑल द रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया एंड इट इज द लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे इन इंडिया. ASER सर्वेज प्रोवाइडेड रिप्रेजेंटेटिव एस्टिमेट्स फॉर द एनरोलमेंट स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन एजेड 3 to 16. तो 3 से 16 तक का यहाँ पे जो चिल्ड्रन का जो ग्रुप है इस एज ग्रुप में कितना एनरोलमेंट हुआ है तो यहाँ पे ये डेटा मिलेगा आपको. प्लस you will be finding data about the reading ability and the arithmetic ability of the children in the age group 5 to 16. So this is very important. तो यहाँ पे विजन क्या है, पर्पस क्या है, तो यहाँ पे to learn about the enrollment ratio. कितना यहाँ पे students are getting enrolled in the primary education, that is in the age group 3 to 16 में यहाँ पे कितना enrollment हो रहा है. प्लस जो बेसिक रीडिंग एंड द न्यूमरेसी एबिलिटी, मतलब यहाँ पे लोग जो भी यहाँ पे चिल्ड्रन है लाइक वेदर दे कैन रीड ऑन और वेदर दे कैन डू द बेसिक मैथ्स और नॉट इन दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप. सो 5 to 16 में यहाँ पे जो पर्पस होगा इट विल बी रीडिंग एंड अरिथमेटिक लेवल एंड 3 to 16 में अगर आप देखोगे इट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन द एनरोलमेंट रेशियो. Now we'll talk about the findings of the report. Now let me be very honest कि यहाँ पे जो findings है, findings are very vast. ठीक है, बट हम यहाँ पे कुछ important जो findings है हम उसे highlight करेंगे. ठीक है, now it is very obvious that it is not possible to remember all the facts and all the findings of this particular report. But what I will say is that because देखिए ये याद करना possible भी नहीं है, प्लस ये necessary भी नहीं है. क्यों necessary नहीं है? Because आपको एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछेगा. बट अगर मैं यहाँ पे जितना फैक्ट्स आपको highlight करके दे रहा हूँ, अगर आप ये याद कर लेते हो ना तो ये आपको हेल्प करके आंसर राइटिंग में. आंसर राइटिंग में मान लीजिए आपका ऐसा राइटिंग में आपको एजुकेशन के ऊपर आ सकता है, या मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ सकता है ऑन एजुकेशन अबाउट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्रॉम पेपर 1 एज वेल. ठीक है, तो इस केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो काइंडली आप जितना हो सके ऐसे ले लीजिएगा. सो एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल के बारे में अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द ASER रिपोर्ट ऑफ द ईयर ऑफ 2022 द कंट्री हैज सीन एन इंक्रीज इन द एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल. नाउ दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन एक्चुअली. आप देखोगे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है दे बेसिकली ऑप्ट फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, है कि नहीं. लेकिन अभी जो यहाँ पे लास्ट ईयर जो है तो इससे यहाँ पे ये बस फोकस हो रहा है, आप कैसे ये रिवील हो रहा है कि जो स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट एजुकेशन है ना वो भी काफी इंप्रूव हो रहा है. तो दिस इज द रीजन व्हाई द लास्ट ईयर हैज सीन एन इंक्रीज इन द एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द गवर्नमेंट स्कूल्स.
द बेसिक रीडिंग एंड अरिथमेटिक स्किल का अगर हम बात करेंगे तो इस केस में लेकिन देयर इज अ डिक्लाइन. सो देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द बेसिक रीडिंग एंड अरिथमेटिक स्किल्स ऑफ द यंग चिल्ड्रन इन क्लास 3 एंड क्लास 5 इन इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे जो रीडिंग स्किल्स एंड अरिथमेटिक स्किल जो लास्ट ईयर का जो डेटा था, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देयर हैज बीन अ डिक्लाइन. एंड फाइनली अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स नॉट एनरोल, तो देखिए दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन कि इनिशियली इन द लास्ट ईयर था, दैट इज 2018 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एज ग्रुप ऑफ 11 से 14 तक के जो यहाँ पे गर्ल्स है, तो वहाँ पे बस 4.1% वाज देयर हु वर नॉट एनरोल्ड. ठीक है, लेकिन अगर आप करंट ईयर में देखोगे, जो इस बार का जो रिपोर्ट है इस पर अगर आप देखोगे तो इट हैज बीन रिड्यूस टू 2%. सो देयर आर ओनली 2% ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट एनरोल्ड इन स्कूल्स इन द एज ग्रुप 11 to 14, व्हिच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन. राइट, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, नाउ दिस बेसिकली इंडिकेट दैट एफर्ट्स टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, व्हिच इज अगेन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आल्सो, शुड नो दैट. ऑलराइट, इन एजुकेशन हैव बीन इफेक्टिव एंड हैव हेल्प टू इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो दिस पर्टिकुलर डेटा जो है, तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, दैट इज अगर हम बात करेंगे यहाँ पे निपुण भारत के बारे में, तो उस तरीके से अगर हम उसे कंपेयर करेंगे, देन यस दिस पार्टिकुलर निपुण भारत स्कीम जो है ना, दिस हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन द हायर एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. राइट, तो यहाँ पे सारा जो डेटा है ये यहाँ पे दिया गया है, तो काइंडली एक बार देख लीजिएगा. इफ यू फाइंड एनीथिंग इंपॉर्टेंट देन यू कैन जस्ट टेक इट अप इन ऑर्डर टू राइट आंसर्स. एंड फाइनली इफ यू टॉक अबाउट द केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अब ये जो रिपोर्ट है इसका जो फाइंडिंग्स है ना, दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ द बेसिकली ऑफ अ न्यूज इन द अरुणाचल टाइम्स एज वेल. तो यहाँ पे जो डेटा है इट इज क्वाइट अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक. तो इफ द क्वेश्चन कम्स about the state of education in Arunachal Pradesh, so this particular facts will help you. So according to the same report only, Arunachal Pradesh has recorded over 95% enrollment of children in the schools in the past 15 years. Okay, in the age group of 6 to 14 में. So this is a very positive sign for the state of education in Arunachal Pradesh according to the annual status of the education board, that is ASER. So despite closure of school, तो आपको बताइएगा कि COVID-19 के टाइम में लॉकडाउन चल रहा था, तो यहाँ पे स्कूल सारे बंद था, but the enrollment ratio in the north eastern states as well, आप देखोगे यहाँ पे इंक्रीज काफी हुआ है from 97.2% to 98.4%. तो 18 से पहले दैट इज आप देखोगे यहाँ पे कोविड से पहले, तो कोविड के पहले जो यहाँ पे एनरोलमेंट रेशियो था उससे काफी बढ़ गया है कोविड के बाद में. द रिपोर्ट व्हिच वाज रिलीज्ड ऑन वेडनेसडे इन अरुणाचल, द सर्वे कवर्ड अ टोटल ऑफ यहाँ पे इतना विलेजेस एंड सो मेनी हाउसहोल्ड्स हैव बीन डन. एज आई टोल्ड यू कि ये सर्वे जो है इट हैज बीन अ हाउसहोल्ड सर्वे है. सो इन अरुणाचल द एवरेज टीचर अटेंडेंस अगर हम बात करेंगे, सो टीचर अटेंडेंस हैज आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है, फ्रॉम 72.7% to 75.4% इन द करंट ईयर. हाउएवर एवरेज अटेंडेंस जो है इट हैज डिक्रीज फ्रॉम 78.3% to 75.9%. तो यहाँ पे स्लाइड डिक्रीज हुआ है. और इसी टॉपिक के बेसिस पर एक पुलिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, काइंडली आंसर इन द कमेंट सेक्शन. बट दिस फैक्ट जो है अरुणाचल के बारे में, तो काइंडली जस्ट मार्क इट अप बिकॉज दिस कैन बी यूजफुल फॉर राइटिंग एन आंसर. The next article is about the Western Ghats, where a new plateau has been discovered. Now, this is basically discovered in the state of Maharashtra, which can be important for our prelims and also from mains. It can be important from GS paper 1 Indian geography point of view, plus a little from the conservation point of view, because we'll look at the significance of this particular plateau. It has been taken from the Indian Express. तो ये जो करंट कंटेक्स्ट है, सो रिसेंटली a rare low altitude basal plateau, ठीक है. सो बेसल प्लेट्यू है, सो बेसल यू मस्ट बी नोइंग कि ये एक इग्नियस रॉक है व्हिच इज बेसिकली रिलीज ड्यूरिंग द आउटबर्स्ट ऑफ लाइक वोल्केनो. ठीक है, तो वोल्केनो के टाइम में जो भी यहाँ पे आउटपुट होता है उसे बेसल्टिक फ्लो में इग्नियस रॉक्स यहाँ पे बाहर होता है, व्हिच बेसिकली कूल डाउन्स. एंड फाइनली जो बेसल इट इज ऑल्सो द रिजल्टेंट और यू कैन से इट इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल एज वेल, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है. राइट, सो अ लो altitude basal plateau has been discovered in Maharashtra in the Western Ghats, which can study the effect of climate change on the species survival. ठीक है, ये किस तरीके से ये हेल्प करेगा हम इस आगे देखेंगे. एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द कंजर्वेशन नीड्स ऑफ द रॉक आउटक्रॉप्स एंड द इमेंस बायोडाइवर्सिटी वैल्यू इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पे जो rock outcrop, it is basically is a part of rock formation that appears above the surface of the surrounding land. All right, so if you talk about the important findings about this plateau, so it is, as I told you, it is a low altitude basal plateau. देखिए अब ये जो discovery है, it is the fourth one. All right, this is the fourth type of plateau which has been discovered in the region, which is identified in the region. तो previous जो थे यहाँ पे tree, so they were laterites थे. ठीक है, तो you must have heard about the various soils, that is laterite soil, black soil. तो black soil जो है तो ये derive होता है from the basaltic rocks only. All right, so these are laterites at the high and the low altitude and basal at the high altitude. So यहाँ पे this is the third, I'm sorry, this is the fourth one which has been discovered recently in Maharashtra. And if you talk about the biodiversity, यहाँ पे जो diversity के बारे में, so during the survey of this plateau यहाँ पे 76 species of plants पाए गए हैं and shrubs as well from 24 different families which were reported. So this is considered an important discovery as the plateau shares the vegetation with the other three rock outcrops. तो यहाँ पे बाकी के जो outcrops है, outcrops में जो भी यहाँ पे
आप कह सकते जो भी यहाँ पे फ्लोरा है तो उसमें काफी यहाँ पे सिमिलरिटी पाया गया, simultaneously holding a few unique species. So this gives a unique model system to study the species interaction in various, आप कह सकते हैं in varying environmental condition. तो यहाँ पे जो आउटक्रॉप होता है ना, आउटक्रॉप में आप देखिए क्या होता है, आउटक्रॉप आर बेसिकली बिलीव टू बी लाइक सुटेबल और यू कैन से फेवरेबल प्लेसेस फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस. ठीक है कि यहाँ पे कितना इंपैक्ट हुआ है एनवायरमेंट का, कितना यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है या सिग्निफिकेंट है. ठीक है, सो रॉक आउटक्रॉप जो यू शुड नो दे हैव गॉट सीजनल वाटर अवेलेबिलिटी, लिमिटेड सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स एज वेल. ठीक है, तो रॉक आउटक्रॉप जो होता है ना उसमें सीजनल वाटर अवेलेबिलिटी रहता है, कभी यहाँ पे आप जो यहाँ पे वेट सीजन रहता है उसमें पानी रहेगा, तो जिसमें पानी नहीं रहता है. ठीक है, और यहाँ पे जो सॉइल है वो काफी लिमिटेड है, प्लस न्यूट्रिएंट्स एज वेल. तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है जो कंडीशन है, सो दिस मेक्स देम एज आइडियल लेबोरेटरीज, ताकि यहाँ पे आप अच्छी तरीके से आपका जो एक्सपेरिमेंट है आप वो कर पाओगे. एंड ऑल्सो टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और स्पीशीज सर्वाइवल. So plateaus are thus a valuable source of insight into how species can survive in extreme condition. So this is the reason why this particular discovery is very significant to us. So finally, if we talk about the particular Western Ghats के बारे में, अब ये Western Ghats जो है, you'll find them in the periphery of the peninsular India. तो periphery of peninsular India में आपको two mountain ranges मिलेगा. एक हो गया Western Ghats on the western coast और दूसरा आप देख सकते हैं ये हो गया आपका Eastern coast. ठीक है, sorry, Eastern Ghats on the Eastern coast. तो this Western Ghats are very significant. अब यहाँ पे एक और significance क्या है, except the biodiversity part, तो it also is a very important mountain range which helps in the occurrence of monsoon rainfall. ठीक है, because this ये जो वेस्टर्न रेन घाट्स है दे लाई परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है, सो वेस्टर्न घाट कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ माउंटेन. दिस इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन रनिंग पैरेलल टू इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट एंड पासिंग फ्रॉम वेरियस स्टेट्स लाइक केरला, देन महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका एज वेल. दिस स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स पाया जाता है, एंड ईस्टर्न घाट्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, उड़ीसा. The Western Ghats is one of the 4 global biodiversity hotspot in India. तो इंडिया में आप देखोगे there are 4 global biodiversity hotspot. एक तो हो गया वेस्टर्न घाट एंड दूसरा जो यहाँ पे the remaining are the Himalayas, the Indo-Burma region जहाँ पे North East also forms a part of it, and the Sundaland which includes the Nicobar Island. ठीक है, so it's recognized as a UNESCO World Heritage Site as well. Now finally we talk about the significance of this particular Western Ghat. The Western Ghats, as I told you, they influence the Indian monsoon. So because they lie perpendicular to the direction of the southwest monsoon, तो इसीलिए जब भी यहाँ पे southwest monsoon आता है during the summer season में, तो ये strike करते हैं perpendicularly and they cause rainfall. ठीक है, ये जो Western Ghats है इसका Western coast में आप देखोगे बहुत काफी यहाँ पे rainfall होता है, इसीलिए यहाँ पे evergreen and semi evergreen forest भी पाया जाता है. ठीक है, तो this the reason why this particular region is so biodiversity rich. All right, so that mediate the warm tropical climate of the region. They act as a barrier to rain-laden monsoon winds that sweep in from the southwest. And because they act as a barrier, तो यहाँ पे जिस साइड से विंड आ रहा है ना, मानसून जो विंड्स आ रहा है, तो उस साइड में यहाँ पे बारिश भी कॉज होता है. तो इसीलिए ये साइड है इसे कहा जाता है रेनवर्ड साइड, और आप देखोगे जो ये दूसरा साइड है इसे कहा जाता है लीवर्ड साइड. ठीक है, सो लीवर्ड साइड में आप देखोगे बारिश कम होता है या वो रेन शेरो एरिया में होता है, और जो यहाँ पे जिस साइड में विंड आ रहा है आप वेस्टर्न घाट उसमें काफी रेनफॉल होता है. सो वेस्टर्न घाट्स आर होम टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एज वेल एज 325 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज भी पाया जाता है. राइट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्यों? बिकॉज यहाँ पे काफी रेनफॉल होता है, एज आई टोल्ड यू. सो प्लेट्यूज आर द डोमिनेंट लैंडस्केप इन द वेस्टर्न घाट्स, सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज. इस टॉपिक के बेसिस पर पुलिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, काइंडली आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about Arunachal Pradesh, where an educationist named Rongili Mibang has passed away. So this can be important for our prelims, not for the mains, but it has been taken from the Arunachal Times. So let's learn about Rongili Mibang. So one of the pioneers in the area of women's education in the state. So she visited her last on Thursday afternoon at Mirkudapi residence in the East Young district. This residence is not important, but then again, her name, her profession, her area is important. Mibang, retired joint director of the education department, was the wife of Rajiv Gandhi, RGU के former vice chancellor. There is Tamo Mibang. तो उनके wife थे Rongili Mibang. So local MLAs, so they basically paid the respect because she used to be a prominent figure in the Siang region. So she was born in 1958. Then Mibang had also completed her BA in 1976 and MA in 1978. She had also served as the DDSE of basically in the Department of Education only of Shanglang district from 2000 to 2012 and Papumpar district from 2003 to 5. All right. So this is a question which can be asked in your upcoming examination. Please answer in the comment section. The next article, second number, Arunachal Pradesh. It has been taken from the down to word. It is about the Etalin Hydroelectric project, which has been recently scrapped by the government. ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करते हैं. It can be important for our prelims and from mains. It can be important from a GS paper conservation point of view. And as I told you, it has been taken from the down to word.
So this you can see in the Dibang region, you will find the Etalin जो project था, that is the hydroelectric project. अब current context का अगर हम बात करेंगे तो ये project जो has been scrapped in its present form. तो अभी का जो planning था तो इसे scrap कर दिया गया है. हो सकता है future में there can be a new plan. So the plan combine two run of the river schemes. So what is the meaning of run of the river? So it basically refers to a dam or a hydroelectric project. So which is a type of hydroelectric generation plant whereby little or no water storage is provided. तो ये जो यहाँ पे जो run of the रिवर प्रोजेक्ट होता है ना, तो इसमें आपको जानना चाहिए कि देयर इज नो वाटर स्टोरेज. अगर यहाँ पे रहता भी है तो बहुत कम लिमिटेड वाटर स्टोरेज रहता है. सो रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट जो होते हैं दे मे हैव नो वाटर स्टोरेज एट ऑल और अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज इन विच अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्टोरेज है तो वहाँ पे जो स्टोरेज का जो फैसिलिटी होगा, जो रिजर्वर होगा, उसे कहा जाता है पॉन्डेज कहा जाता है. ठीक है. तो द प्लान कंबाइन टू रन ऑफ द रिवर स्कीम्स विद लिमिटेड स्टोरेज रिक्वायरिंग कंक्रीट ग्रेविटी डैम्स ऑन रिवर्स टैंगॉन एंड ड्रीप. तो दिस रिवर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी रिवर पे प्लान किया गया था इटालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. इट रन इन सेवरल कंट्रोवर्सीज सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2008. तो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे controversies जो है they are about the local people, they're about the threat that has been posed by the biodiversity of the region. ठीक है. क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पे यहाँ पे जो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो ये पास में, तो इसीलिए जो फॉरेस्ट इन्वेजन का भी यहाँ पे इशू आ रहा था, इकोलॉजिकल डैमेज टू द फ्लोरा एंड फॉना ऑफ द रीजन एंड ऑल्सो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट. So if you talk about the Tangon and the Deer river के बारे में, so this particular rivers, so they are the tributaries of the Dibang river. ठीक है. So Dibang river which is again a tributary of ब्रह्मपुत्र. So ब्रह्मपुत्र का tributary है Dibang और Dibang का tributary है Deer and Tangon, जहाँ पे प्लान किया गया था Etalin hydroelectric project in Arunachal Pradesh. India the following significance. तो पहला यहाँ पे significance के बारे में बताया गया about this river is the hydrological. तो पहले हम बात करेंगे, आपको पता ही होगा कि river जो है like any जगह पे कोई भी river जब रहता है, they are important sources of the you'll find the important sources of livelihood, the important sources of fresh water. So both rivers, whether it's Tangon and Dir, so they contribute to the overall hydrology of the region by providing water for irrigation and hydropower generation as well. So क्योंकि ये fresh water है, so this can be useful for consumption as well. And also about ecological, the Dir and the Tangon river support a diverse array of plant and animal life, including rare and endangered species as well. And also the जो region है, they're quite beautiful, they're quite the confluence is quite beautiful. तो इसीलिए they are also treated as places of tourist attraction. The scenic beauty of the Dir and the Tangon rivers along with Dibang is a major tourist destination. And finally, we talk about the current concerns के बारे में which have been raised about the Italian hydro project और जिसकी वजह से यहाँ पर जो hydro project है इसे scrap करना पड़ा in the present form. The first one is the environmental impact. As I told you, it poses like a kind of threat to the existing flora and fauna of the region, and also because the Dibang wildlife sanctuary is one of the 8 wildlife sanctuaries of Arunachal Pradesh which lies in proximity of this particular project. All right, so this could lead to displacement of the local communities and have a significant impact on the region's biodiversity, and also displacement of the local communities. तो यहाँ पे अगर if you take up this project, this can also hold a threat to the indigenous communities who rely on the Dibang river for their livelihood as well. तो यहाँ पे जो homes है, जो livelihood है, who which are mostly regarded with the indigenous communities of this particular region, so it can be harmful or detrimental to them as well. And also about the impact of river ecosystem, the project जो है it would have changed the natural flow. तो जो यहाँ पे जो rivers है, Tangon and Deer river, तो इनका जो natural course है, so it may get affected. It may get affected. So this is the reason why. And this would also have a negative impact on local communities who rely on fishing for their livelihood. देखिए अगर मान लीजिए कि जो river course अगर वो change हो जाता है, definitely जो यहाँ पे population था which depended on this particular river for their livelihood, now they would get affected too. And also about the geological and seismic risk. तो ये जो concrete gravity dam if we construct on the Dir and the Tangon river, now they also had a kind of a seismic or you can say a threat of earthquake क्योंकि ये जो region है, because if we store water, it may hold an adverse effect on the seismic aspect as well. ठीक है. जो South Asia network on dams, rivers and people, this is important, जिसे संदर्भ कहा जाता है, South Asian network on dams, river and people. Now they've also highlighted the geological and seismic risk. Mainly यहाँ पे बात किया गया about the earthquake के बारे में, which can be human induced in nature, and threats to biodiversity in 2015 when environment clearance to the project was underway. And also recent development on the issue. So finally, the Forest Advisory Committee जो है, they've asked the Arunachal Pradesh government to go back to the drawing board and submit the plan of the project again because it has been scrapped in the current form as I told you. This topic here, please practice question है. Please answer in the comment section. This was the question that I asked in the previous video. Let's look at the answer. So the answer for the first question is indirect tax is GST, and if we talk about the AK203, so India and Russia have been jointly developing it at a plant in Amethi, which is in Uttar Pradesh, right? उसके बारे में if we talk
talk about the largest freshwater lake के बारे में, तो ये हो गया आपका वुलार लेक इन जम्मू एंड कश्मीर. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट 60,000 मेगावाट जो इंडिया का रिस्पॉन्स है टू द मेडोक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ चाइना, सो इट इज बेसिकली प्लांट इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.